Priyank Kanungo, are you disappointed with this defense of such a hadith or such a concept of Ghazwa-e-Hind? What do you make of what Maulana Rashidi Sahib just said? I am feeling offended, not disappointed. On one hand, they are doing all these things, and on other hand, they are justifying their sins. So I feel offended, not just disappointed. But law will take its own course, and they will be punished. I believe on the judicial system of India. I believe on the police system of India. I believe on the Parliament of India. They will be punished. They will be lodged under a FIR. I have faith in the state authorities. Fair enough, sir. मौलाना साजिद रशीदी जी, दारुल उलूम को क्या ये नहीं कहना चाहिए कि जो भारत के मुसलमान हैं वो इस तरह के गज़वा हिंद या भारत पर हमले की ना वकालत करते हैं ना उसके साथ है, क्योंकि इस तरह की बातें तो वो लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी ही करते हैं। सर, ये जितने भी नाम आपने लिए हैं सारे पाकिस्तानी हैं, हिंदुस्तानी है कोई यहाँ ऐसा? सर, यहाँ पर 2 हिंदुस्तानी संगठनों का भी जिक्र किया गया था, जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इंडियन मुजाहिदीन, या जो पहले सिमी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया था। देखिए, जिक्र को छोड़िए, अब तक नहीं सर, हम तथ्यों के साथ जिक्र करते हैं। गज़वा हिंद की जो बात करता है, क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मेरे भाई, तूने दूसरों को सुनते हो, मुझे सुनते नहीं। मुझे सुन लो ना, मैं 3 में अकेला हूँ। बताइए। मैं 3 में अकेला हूँ, वैसे भी माइनॉरिटी में हूँ, सुन लो। सर, मोहम्मद बिन सलमान साहब भी रिफॉर्म्स कर रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के। मैं सऊदी में थोड़े बैठा हूँ, मैं हिंदुस्तान में बैठा हूँ। धर्म तो वहीं से आया सर। सलमान क्या कर रहा है मुझे क्या पता? धर्म तो वहीं से आया ना सर। फिर वही बात, अगर मोहम्मद बिन सलमान धर्म को नहीं मानेगा तो क्या मैं हिंदुस्तान में बैठ के मानूं उसको? ना माने, वो उसकी मर्जी है, मुझे क्या करना है उससे? ना मैं पाकिस्तान को मानता, ना मैं सऊदी को मानता। मैं मुसलमान हूं, इस्लाम को मानता हूं। जो इस्लाम की सच्ची पैरवी करेगा उसको मानूंगा। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में इसीलिए रहा है, पाकिस्तान को इसीलिए नकारा है हमने, क्योंकि पाकिस्तान की जो थ्योरी है, जो सोच है, वो गलत है। गज़वा हिंद की सोच गलत है। गज़वा हिंद की सोच गलत है, ये तीसरी बार पूछ रहा हूं आपसे। अरे मैं 10 बार बोलूंगा इस बात को। किसने बोला है गज़वा हिंद करने के लिए? फतवे में कहीं लिखा है? सर, आप कानून, आप मैं जीनत शौकत अली जी के पास फिर जाने पर इसलिए मजबूर हो जाऊंगा क्योंकि मेरा प्रश्न आपसे बहुत सीधा है। मेरा प्रश्न आपसे सीधा है, क्या गज़वा हिंद गलत है? आप हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और आप हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं और आप पाकिस्तान नहीं गए, ये सब आपने कह दिया। क्या गज़वा हिंद गलत है? नहीं कि मैं ये से नो का जवाब दूंगा, रैपिड फायर नहीं है ये कि ये से नो का जवाब दूंगा। आप मुझसे जवाब सुनिए, जवाब दूंगा जवाब के तरीके से। रैपिड फायर मत खेलिए मेरे साथ में, मैं बहुत डिबेट में बैठता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं डिबेट में नहीं बैठता। साफ पता चल रही है। मेरा प्रश्न आपसे सीधा है, क्या गज़वा हिंद सही है कि गलत है? मेरे देश की एजेंसियों को पता नहीं है कि दारुल में क्या पढ़ाया जा रहा है या पिछले 100 साल से क्या पढ़ाया जा रहा है। मेरे देश की एजेंसी इतनी वीक है क्या? आज ये सबक दे रहे हैं टीवी पर बैठकर। जीनत शौकत अली जी आपको खुद जवाब दे रही हैं। ये हमारी एजेंसियों से भी ज्यादा पढ़े हुए हैं क्या? इनको कानून गो साहब को देश की एजेंसियों का चीफ होना चाहिए था। ये प्रमोशन चाह रहे हैं अपना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जीनत शौकत अली जी, आयास रशीदी साहब एटलीस्ट 5 times is Ghazwa-e-Hind wrong? He's actually dodged that question. What's your appreciation, madam? I think it is absolutely a weak hadith which has to be looked into. It is misleading. It is creating Islamophobia. It is giving a completely contrary understanding of the peace of Islam. I'm quoting to you a tradition of the Prophet Muhammad which says, "He who knowingly lends support to tyranny is outside the pale of Islam." And I'm telling you, Hubbal Watan Minal Iman means love for one's nation is part of one's faith. हिंदुस्तान में मुसलमान है। So therefore, when he's talking about Indian Muslims, he must understand that he should, just because something has been put inside from 2008 or it could be put out in 2000 or whatever year, what is not right has to be removed. Okay. Has to be deleted. And Islam has never taught the things of this kind.
Islam has taught you faithfulness and love for your country, to be a proud Indian, to be a proud Muslim, to be living in India. We are unique, we are separate, and we are different, and we are good people to show the world that and to say the right things. That is what we are here for. If you call yourself an Indian Maulana Muslim, Rashidi still doesn't say whether Ghazwa-e-Hind is correct or wrong. I've asked him this जो 6 times. सच्चा मुसलमान है वो देश के खिलाफ गतिविधि कर ही नहीं सकता। जो सच्चा मुसलमान है, ये आप सिखा रहे करने के लिए, जो सच्चा मुसलमान है वो कर ही नहीं सकता। निकालिए Dr. Vikram Singh, as a former Director General of Police and someone who's dealt extensively with radical Islamic terror, and not just of LET and JEM that comes from Pakistan, but Students Islamic Movement of India and the Indian Mujahideen, sadly, Indian Muslims misused by ISI of Pakistan. Is the concept of Ghazwa-e-Hind troublesome? Does it have the potential to create trouble for Bharat? Absolutely. You forgot the name to name the PFI also, and so other mushrooming institutions that have used the concept of Ghazwa-e-Hind and used it in their process of brainwashing and indoctrination. Now, as an Indian, I would say that any anti-Indian force, any force that is anti-Indian has no place, and they will be hunted down within the ambit of law and taken to task within the ambit of law. Therefore, to say and beating around the bush and not coming to the point and saying this has happened, this is historical, this is mythology, this is philosophical, this is ritualistic, this is individualistic. I salute Zeenat ma'am, for she has come out with the truth and the absolute truth, with a true Indian patriot would say. And I would expect everyone to be at least equal to the task of what Zeenat ma'am has said. But to be anything else, and I, again, as an ex-police officer and as a proud Indian, would say that any anti-national activity on anyone who has anti-India sentiments, there will be consequences. Okay. And there is absolutely no question of any tolerance of any such anti-India sentiment, whether it is Ghazwa-e-Hind or whether it is what you have. Okay. Let me bring in Priyank Kanungo once again Islam. into this concept conversation. of Darul Haram and Darul Islam is totally unacceptable in India, at least. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath had earlier warned troublemakers that their dream of Ghazwa-e-Hind will never come true. Listen in to what he'd said. This was in February 2022. जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई-हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। Mr. Kanungo, as the chairman of the National Commission for Protection of Child Rights, what is your expectation, one, from the Saharanpur administration, and two, what would you expect Darul Uloom Deoband to do, sir? My simple expectation from Saharanpur administration is to lodge an FIR against such perpetrators. What I suggest to Darul Uloom Deoband is just get all the children enrolled in schools of your institution as well as the institutions affiliated by you. Okay. Zeenat Shaukat Ali, it may be, this concept of Ghazwa-e-Hind may be in a hadith, but if it is in conflict with the law in the land of Bharat, clearly that message should go out. India will run according to the law of the land, and perhaps not as what you described is in some hadith. Absolutely. You see, that I just want to make one fine point here, Gaurav, if I may. Please, you see, the hadith, the collection of hadith itself has been questioned by, and the writing of it and the authenticity, because there are many kinds of hadith. Mutawatir hadith is something which is 100% right. Mashhur hadith is ahadi, means a single related. It's a big, huge science. Now, what this gentleman is quoting is a weak hadith.
is a weak hadith which could only have 10% authenticity. How can you even consider that? And therefore, His Royal Highness has set up Mohammed bin Salman has set up a panel to look into these hadiths, and I'm quoting. I'd like to quote from Kamal Abdul Rahmani, 5/8/2021, and he has said in Al-Arabiya, and he has said that in the teachings in Mutawatir hadith, which are well known, and look into the veracity and reliability of hadiths, and to disregard khabar, yani ki just urti hui hadith, khabar, hadith entirely, unless it is a clear benefit, it is good and derived from it for humanity, unless it's a humanitarian cause. So one has to understand that this is a huge science, and hijacking of such, religious, some deeply valuable religious literature is being distorted. If it was inserted in any kind of a website, whichever year, it should have been removed. And if Fair enough.